यूट्यूब पे लाइव हो गया है ना? हाँ ठीक है। हेलो एवरीवन ऑन यूट्यूब, क्या हाल है आप सभी के? चलिए, सो लेट्स ऑफिशियली किक ऑफ टुडेज सेशन. सो नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज पूजा शर्मा, को-फाउंडर ऑफ थिंकिंग ब्रिज, और आज का सेशन डेडिकेटेड है मॉक इंटरव्यूज को. लास्ट वीक आई बिलीव, लास्ट वीक भी शायद हमने एक मॉक इंटरव्यू का सेशन लिया था और उस पर बहुत बहुत सारा प्यार आया, बहुत सपोर्ट आया कि ऐसे सेशंस हमें और रेगुलरली करने चाहिए. सो in response to that, here we are again hosting yet another mock interview for you all. And क्या बात है, आज बहुत ही ब्राइट चेहरे देखने को मिल रहे हैं. अनीश फिर से हाजिर है. अनीश, you gave the interview last time. How come you are here today? Do you want to share your experience or something? Did you get any responses from any companies? And इसी बीच लास्ट लाइव के बीच और इस लाइव के बीच एक बहुत ही बड़ी क्या बोलते हैं उसे, इवेंट हुई है, एंड दैट इज योर सीए रिजल्ट्स, राइट? एट टाइम्स आई गो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट या. सो जो लोग सीए बन गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वेरी मेनी कंग्रेचुलेशंस. बहुत ही एक लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव किया है. और जिन लोगों को नहीं हुआ है, इट्स ओके गाइस, दिस इज सीए, वी नो हाउ दिस इज सपोज टू बी, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट मैं उतना ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई बिलीव ऑल ऑफ योर टीचर्स, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिनसे भी आप मेंटरशिप लेते हैं रेगुलरली, स्पेसिफिकली फॉर स्टडीज, वो लोग आपको सपोर्ट कर ही रहे होंगे. बट या, फाइट बैक गाइज, इट्स योर टाइम टू फाइट बैक. Yes, Avantika, I remember. We'll do your interview as well because आपका last time रह गया था. ठीक है? So let me just grab my notebook from where we last left. Okay. पूरा भरी हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है. So today also, tonight rather, today बोल रही हूँ मैं वापस से. So tonight we are gathering here for yet another mock interview session. And last मैंने आकाश को promise किया था कि मैं उसका interview लूंगी सबसे पहले. So we'll start off with that. But before we actually kick off, before we get into the mood of mock interviews, do you guys have any doubts that you want to ask? So that, do you guys want to talk to me before we start the session? You can raise your hands or you can let me know in the chat. क्योंकि उसके बाद एक बार हम, okay, Anish wants to talk. Let's talk to Anish. Yes, Anish, क्या रहा रिजल्ट का, पहले तो ये बताइए. Actually, ma'am, I am qualified chartered accountant in May 23. अरे अच्छा, हाँ, आपका तो पहले ही हो गया था ना शायद से. Yeah. हाँ Yeah. चलो भाई, बहुत बढ़िया. सीए अनीश, तो नाम क्या है, सीए अनीश लगा दो यार. Okay. Yeah, लगा I will लेना give आराम से. that. हाँ जी, बताइए. Ma'am, actually there was one question which was asked by the partner in the partner round, हाँ. that how will you determine materiality in practical manner? Okay. So actually I have given the answer in theoretical manner because हाँ. I have read that, but हाँ. in a CA firm, in a mediocre CA firm, we do not calculate the materiality. So Right. how to answer that one? नहीं, आप एक बार, आई थिंक एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, पर रेटो एनालिसिस के ऊपर है, और उसमें हमने मटेरियलिटी के अराउंड ही कुछ बनाया हुआ है. एक तो वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है. बाकी आई एम प्रीटी श्योर मटेरियलिटी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करना है, उसका प्रॉपर एक्सेल पे होता है, जिसमें हम लेवल सेट करते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, राइट. तो यू कुड हैव जस्ट टॉक्ड अराउंड दैट, कि डिपेंड करता है हमारे पास केस क्या आया है, और उसमें हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लेवल और वो सब सेट करना रहता है, एंड दैट्स हाउ यू शुड हैव आंसर्ड इट. तो उसमें एज सच दैट वाज नॉट अ वेरी टेक्निकल आंसर. क्या रहा फिर, लाइक कब दिया था इंटरव्यू? म्यूट हो गया, एक सेकेंड. हाँ जी. Yeah. So in the interview, actually, there was a specific question which was asked to me. Like there was a company which have a turnover of 800 crores and have a profit of 30 crores in a financial year 21-22.
Okay. And in the next financial year, we get the turnover of 1,000 crore, but there was a net loss of 5 crore. Okay. Okay. So the profit has been declined by 30 crores and Hmm. turnover has increased by 200 crores. So Hmm. how will you determine materiality? What will be the specific percentage you will apply? Whether you will apply it on 30 crores or Hmm. net loss of 5 crores or 1,000 crores or the difference of profit, which is 35 crores. So how will you Hmm. determine materiality in that case? So that was the question which was asked by the partner. So everybody else sitting here, so guys देख लो पार्टनर भी लाइव एक केस स्टडी बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज फाइन आई थिंक सीए लेवल पे इंटरमीडिएट वाले ज्यादा ना घबराएं कि हम कैसे आंसर करेंगे इसका क्वालिफाइड जब आप हो जाते हैं तो आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आपको केस स्टडीज एज वी कैन सी इन अनीशिस केस कि वो लाइव पूछे जाते हैं सो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टॉक आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा गया ओवरऑल एनी लर्निंग्स दैट यू वांट टू शेयर विद एवरीबडी एल्स हियर अनीश Yeah, sure. So first of all, when we get to apply for the interview, first of all, there will be an HR round in which they will call you on your phone and they will ask you, tell me about yourself. That will be only the HR round. And there will be a next round in which uh, in which the manager will ask, sorry for the interruption, in which the manager will ask you technical questions. In my case, the manager round will has been very great, but in the next round there is also a partner round in which he has asked me question like in materiality, and that's how the all the interview has happened. सो आई थिंक अनीश जब लास्ट टाइम हमने अपना मॉक इंटरव्यू का सेशन पूरा स्टार्ट किया था वी किक्ड ऑफ ऑन दिस नोट ओनली कि आजकल यूजुअली जो एचआर राउंड होता है वो टेलीफोनिक राउंड ही माना जाता है उसमें आपके टेलीफोन वाले राउंड पे ही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं व्हाई दिस कंपनी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन सो वो उस टेलीफोन कॉल के लिए आपको हर वक्त अवेलेबल रहना हो सकता है आप वॉशरूम में हो Yeah. हो सकता है कि आप किसने रिक्वेस्ट किया है ये श्रेय गुप्ता उससे हेल्प नहीं मिलेगा श्रेय बट ओके लेट मी स्टार्ट दिस फॉर यू हो सकता है कि आप कहीं बाहर बाहर गए हुए हो सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल इफ यू अप्लाइड सो थोड़ा सा यू नो ट्राई टू बी अवेलेबल ऑन कॉल्स एट ऑल टाइम्स ट्रस्ट मी और जैसे ही आपको कोई +124 या फिर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आए यूजुअली ऐसा रहता है एचआर दे डोंट यूजुअली कॉल from their personal phone numbers. They usually call from the company's number. Am I right, Anish? So Yeah. usually landline का ही जो एक extension सा होगा उसी नंबर से कॉल आएगा. So please make sure that you're not missing those calls firstly. And secondly, as Anish has mentioned कि manager round, technical round रहता है and partner round is usually a mix of technical and the normal Why do you HR round के जो join? basic Yeah. questions होते हैं yeah so they just want to know because आप उनके टीम के पार्ट होंगे right so they want to meet their team member and they also like partner round को बोला जाता है कि अगर आप वहां तक पहुंच गए हो तो आपका 95% चांस है कि हो ही जाएगा but still the it is such a big deciding factor the partner round also कि उसमें आपको पता चल जाता है whether you are actually in or not ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हम completely उसको हटा ही देते हैं but सबसे डिफिकल्ट मैनेजर राउंड ही होता है जो टेक्निकल होता है बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर एक्चुअली टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स सो ऑन दैट नोट एनीथिंग एल्स अनीश और shall we just kick off and you know while we are in the So live for this हाँ yeah for this answer should I refer the materiality class? हाँ मैं वही बोल रही The हूँ ना question कि which I have उसमें asked. आपको मैं वही बोल रही हूँ हर्ष you want to take this up you were saying that you want to answer yes Harsh I think you're not audible, Harsh. Can you check your earphone connection, please? Audible now? Yeah, better. So here my answer would have been here that I would have tried to determine the materiality level on the 1,000 crores, that is the revenue amount, to see if there has been any misappropriation of funds out there. Also, as to see if there have been any expenses which are
which are above a certain percentage, and after identifying those amounts, there would have been a possibility that some expenses would not have been charged on a regular basis. So from that view, we would have been able to identify whether a fraud has been conducted or not. I'm not sure whether this is the right answer, but this was something that I had on the top of my mind. Yeah, this was the same answer which I have given. But he said that the profit has been declined by 35 crores. And if you take a percentage of the turnover, which is 1,000 crore, the normal percentage will be 0.75% to 1%, which will be 7.45 crore to 10 crores. So if the misstatement will be less than, will be of the amount which is less than 10 crores, how will you determine that? That will be ignored by you in that case. Oh, right. Yeah, that's how the partner round goes. So yeah, they're just trying to understand ki whether are you able to handle a tricky question. How do you behave when a tricky question comes and how do you handle that? So it's absolutely fine. ऐसा नहीं है कि एक question के basis पे आपका पूरा personality या फिर पूरा interview judge किया जाता है. So that's not how it. Actually, ma'am, I have said that I have done the articleship in a mediocre firm, due to which we have not applied materiality on practical basis. एक तो मैं बस यहाँ पे आपको सबको करेक्ट करना चाहूंगी. Whosoever is there in this live session, it's never a mediocre firm, guys. It's a mid-size firm. There is a difference between mediocre and mid-size firm. Mid-size firm tells the scale of the firm, right? And mediocre, we use it as an adjective, right? कि हम उसके कोई traits बता रहे हैं. Mediocre is like बड़ा ही, जैसे हम बोलते हैं ना, mediocre mentality है. So never use the word mediocre, use the word mid-size. ठीक है? Yes, please go ahead, Anish. So should we use like we have done our articleship in mid-size firm and we have not applied materiality on practical basis or not? Whether we should be truthful or not in that case? नहीं, मेरे ख्याल से as such बोलने की जरूरत नहीं है. या फिर आपको अगर आपको सेम चीज बोलनी है, you could probably say it in a way that in the work that I did, maybe I was not able to. ये क्या क्या हो रहा है इसमें? कुछ जूम में अपडेट्स आए जा रहे हैं, पता नहीं. श्रेय कहाँ है? श्रेय ने जो है कुछ लाइक AI समरी का एक्टिवेट कर दिया. आई थिंक वो चला भी. सो या, so I think don't say that mediocre firm है या फिर ऐसा है. Just say that in my work in the firm where I used to work, the processes that we used to apply were a little different than we apply or in big fours and top firms. So in all the work experience that I have been through, I did not come across such a case. So इस तरीके से थोड़ा सा मतलब formalize करके बोल सकते हो कि I haven't really come across where we had to do this. I haven't come across an assignment, and इस तरीके से आप बोल सकते हो. But you can say that I'm eager to learn. I'm definitely always end it with the enthusiasm that you're very eager to learn. That way they'll see कि okay, कोई नहीं हो तो यार अभी भी आप फ्रेशर से ही ना. तो they also don't expect कि नहीं भाई आपको 5 साल के बंदे से कंपेयर किया जाएगा या फिर आपसे पता नहीं क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करेंगे. You should just be able to justify your articleship experience. That's all. ठीक है? कौन सी फॉर्म में दिया था? अब इतना भी बता दो, जब इतने बीन्स स्पिल कर ही दिए हैं. It was in SS Kothari. Okay. चलो, ऑल द बेस्ट. सब लोग ऑल द बेस्ट बोल दो भाई अनीश को रिजल्ट का, कि भाई जल्दी से अनीश जो है SS कोठारी में सिलेक्शन हो जाए. गो SSK, गो अनीश. चैट में टाइप कर दो फटाफट. ऑल द बेस्ट. Ma'am, there were 2 more questions. Should I ask? May I ask? हाँ, पूछ लो. The second question was like which expense you will verify on 100% basis. कोई लेना चाहेगा इस आंसर को? And the third question was how to calculate cash losses. Like in Caro, we have to mention the point of cash, whether the company has incurred cash losses during the year. So how to measure that? These were the questions which I was not able to answer correctly. The second question was which expenses to be analyzed on 100% basis. Shubham is saying legal and professional or rates and taxes, not sure. चलो, टेक्निकल क्वेश्चंस का हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड डिस्कशन. अभी हम शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है, विच इज मॉक इंटरव्यू डेडिकेटेड.
And Akash. Akash, can you please start your video? Yes. Okay. So let's mute everybody else and unmute Akash. Hanji. Yes, ma'am. Yes, Akash. How are you doing today? I'm fine, ma'am. How are you? All good. क्या रहा रिजल्ट का कुछ बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे सबके साथ? मैम इंटर ग्रुप 2 दिया था, वो क्लियर हो गया. ओके, और ग्रुप 1? ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर था. ऑलरेडी क्लियर है. चलिए भाई, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिए आकाश को. सब अपनी बेस्ट विशेस पास ऑन कर दीजिए कि आकाश का जो है बढ़िया से बढ़िया फॉर्म में सिलेक्शन हो, टॉप फॉर्म में सिलेक्शन हो, जहां पर उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिले. ठीक है. हाँ. सो आकाश, कौन सी फॉर्म में जाना चाहते हैं आप? व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? मैम डिलॉयट. डिलॉयट में जाना चाहते हो? कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो? स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट ऑडिट. तो चले आज हम डिलॉयट स्टैट ऑडिट इंटरव्यू लें आपका. यस मैम. ओके. सो एक सेकेंड मुझे देना बस. So let's start. Akash, please start with your introduction. Okay, ma'am. Ma'am, I am Akash Jaga. I am from Sri Ganganagar, Rajasthan. I am pursuing my graduation from MGSU University. I embarked on my CA journey back in May 2021. I cleared my foundation exam in first attempt. Recently, I gave my CA Intermediate Group 2 exams and I passed it with 258 marks. My strengths are I'm very passionate person. I'm very hardworking person, and there is eagerness to learn new things. My hobby is to watch and play cricket. My favorite player is Virat Kohli. His patience, his determination inspires me a lot. The way he bounced back from a lean period in his career inspires me a lot. That's it. Right. So tell me, Akash, why did you choose CA? You had so many options after your class 12th, but why did you choose CA? Actually, ma'am, my father was an accountant. He was an accountant in a paper industry, and he passed away when I was 13 years old. So I'm so my sorry for dream, the loss. no problem, ma'am. My dream is to become a chartered accountant, especially for him and for my mother also. Tell me a little more about your family. कौन-कौन है आपकी family में? In my family, there is my mother only. Actually, we have a joint family, but later on, we shifted to Ganganagar. I was born in Shri Muktsar Sahib, Punjab. Then we shifted to Shri Ganganagar. Okay. Right. So, tell me why statutory audit? You have different options. Why statutory audit is something that you want to pursue your articleship in? Ma'am, actually, I also like direct taxes, indirect taxes. But in my studies, when I study for my intermediate exams, I'm inclined towards audit, and I have also purchased a statutory audit masterclass, uh, wherein I practically learned how audit is planned and performed in top firms, and I also enjoyed it a lot. And that's why I want to pursue my articleship in statutory audit. Okay. So we have vacancies in direct tax also. Would you be inclined towards joining that? Ma'am, I'm more inclined towards statutory audit, but if the opportunity is available, then I'm ready for it. Okay. Right. Why do you want to join EY? Deloitte. Actually, ma'am, I want when I started my CA journey and when I came to know about Big Fours, I wanted to pursue my articleship in
big fours, but Deloitte is one which I was very passionate about, because actually I watched vlogs of various YouTubers. They are article trainees in Deloitte, and when I watched that vlogs, I really liked the atmosphere in Deloitte. Uh, that why I selected Deloitte. Okay. Do you know Excel? Have you worked on MS Excel? Yes, ma'am. Okay. Let's get to the technical bit. Um, Tell me a little bit about Ind AS 109. Actually, ma'am, in our CA inter syllabus, Indias is not there. It is in final, so I have not read it about. Okay, okay. What are audit assertions? Ma'am, assertions refers to representation of management, either explicit or otherwise, which are embodied in financial statement, which are used by auditor to detect a material misstatement in financial statement. Auditor objective is to perform a relevant audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence to verify assertions. In case of P&L items, class of transactions, relevant assertions are occurrence, accuracy, completeness, cutoff, and classification. In case of account balance sheet items, relevant assertions are existence, right and obligation, completeness, valuation, and presentation and disclosure. Hmm. And what exactly is substantive testing? Can you explain me a little bit? Hmm. Okay, ma'am. Ma'am, substantive testing is basically substantive testing is basically of two types. One is analytical procedure, and the other one is a test of detail. In case of Correct. analytical procedure, our expectation is drawn. Uh, and in case of test of detail, it is a vouching and verification of contracts, agreements, and supporting documents. Hmm. Right. Tell me, what is conditional formatting? Ma'am, in Excel, when we go to Home tab, there's option of conditional formatting. Conditional formatting is basically used to highlight cells. There are various options. For example, if we want to highlight duplicate values, for example, there is employee data, and we want to highlight the employees who get a salary of more than 50,000. So we can use conditional formatting here. We can select the range and use conditional formatting. There is an option of greater than. We can fill 50,000 and apply it, and it will highlight the cells of the Hmm. employees Got it. who have their salary. Correct, 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 correct. Uh, Tell me have you used pivot tables? Yes, ma'am. Can you create a scenario and tell me how do you apply pivot tables where you can Uh, use it? Ma'am, for example, if there is employee IDs and employee names and the locations where they are from and the salaries of employees. So firstly, we will select the range and create a table, and then we can use a pivot table. In case of a pivot table, it is a multi-function where we can do multiple analysis in a single go. For example, if we want to check employee data, employee ID, and their salaries, we can directly apply the options. We can take the employee ID in the column side, and there is also No on the worries, no right hand worries, side. no worries. Tell me about two key changes in Caro 2020 as compared to Caro 2016. Ma'am, actually, I don't remember right now. Okay. No problem. आप मुझे ये बता दीजिए कि ऑडिट जब हम परफॉर्म करते हैं, राइट? सो लाइक व्हाट इज द फ्लो ऑफ ऑडिट?
So how do you plan an entire audit? वो बता दीजिए. Okay, ma'am. Ma'am, firstly, we obtain the understanding of business activity. This is called process flow. After obtaining the understanding of the business activity, we understand the control environment and identify a risk of material misstatement. Risk of material misstatement is basically a risk that financial statement could be materially misstated prior to audit. After identifying the risk of material misstatement, we actually we actually perform control testing, wherein we'll test a design and implementation of control and its operating effectiveness. On the basis of on the result basis of the result of control testing, we determine nature, timing, and extent of substantive testing, and then we perform the substantive testing, which consists of analytical procedure and test of detail, and at last we conclude and report. Perfect. So Akash, बहुत काम करना पड़ता है, like you know, busy season में बहुत late sittings लगानी पड़ती हैं. Are you okay with that? Yes, ma'am. I'm okay with that. I can manage my studies along with the work. I can manage the stress. I know अगर मैं Big Four में जाऊंगा तो I'll get more work in the seasons, but I'm ready for it. And are you comfortable relocating to Pune? Yes, ma'am. Okay. Okay. Do you have any questions for me? Ma'am, I want to know about what organization culture of Deloitte. Well, the organization culture is very supportive, I would say. We are very collaborative when it comes to taking up projects and different assignments that we do. So we work in a very supportive, as I mentioned, and a collaborative way, wherein we have to collaborate across different teams. As being part of the audit team, we also have to collaborate on some issues with the direct tax team. And if there are any diligence issues, then definitely we have to interact and collaborate with a due diligence team as well. So yeah, lot of but you'll definitely get a lot of learning opportunities. We promote this culture of learning and thriving in the busy season. So but at the same time, we are very supportive of our team members, and we help them in their personal growth as well. So that's there. Thank you, ma'am. All right, thank you so much. Guys, how did Akash do? पहले तो बताइए जरा. Interview officially over हो गया है. Let's get back into our real characters. Perfectly fine. Very nice interview, जी. बहुत बढ़िया किया. जरा YouTube पे क्या चल रहा है? YouTube. Zoom का जरा लिंक शेयर कर दीजिए मैम. अभी कर देते हैं. ओके, अभिषेक आप ज्वाइन कर सकते हैं. हाय मीनाक्षी, हाय अतुल. क्या मॉक इंटरव्यू सी आर्टिकलशिप का लिंक भी हेल्प? हाँ, अभी आर्टिकलशिप वाले का ही ले रहे हैं. अभी हम इसके बाद क्वालिफाइड का लेंगे. नाइस नाइस नाइस. सीम फुल्ली प्रिपेयर्ड. यस, आकाश वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड. मेरे को तो साउंड ही नहीं आ रहा. अजय, जस्ट ट्राई टू डिस्कनेक्ट योर earpiece, whatever you're using, and then reconnect. Whether the understanding of business is first step or planning an audit is first. बताइए आकाश. Ma'am, understanding the business activity. ठीक है अनीश जी. आप ना अनीश, स्टैट्यूटरी ऑडिट गाइड, हमने इंटरव्यू गाइड बुक बना रखी है. इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी. सो जस्ट गो थ्रू इट. उसमें हमने सारे क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, वो सारे हमने वहां पर मेंशन कर रखे हैं. ठीक है. सो वो कहाँ से एक्सेस करना है? आपको फ्री करियर मास्टर क्लास में जाना है और वहाँ पे रिसोर्सेज के सेक्शन में जाके आपको वहां से मिल जाएगा. सो वो वाला बस आप एक बार रीड कर लीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम देयर. ग्रेट कम्युनिकेशन, जस्ट फोकस ऑन. हाँ, तो आएंगे उस पर. चलिए आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फीडबैक. So Akash, very confident voice. You were very confident when it came to your technical part. You were fully prepared. मतलब सब रिवाइज करके बैठे हो, बिल्कुल समझ आ रहा था. Kudos to the confidence that you are carrying to the interview room. Really, really great. Couple of changes definitely. Introduction में जैसे मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा इनकम्प्लीट लगा. I wanted to know more about like
जैसे कि आपने क्या क्या बताया था, I'll just tell you the flow that you used. आपने अपना सब राजस्थान का बताया, ग्रेजुएशन का बताया, फिर May 21 का बताया, फिर ग्रुप 2 का बताया जो आपने लेटेस्ट क्लियर किया है. However, it should be latest first और reverse chronological order. जो सबसे पहले आपने क्लियर किया है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बात करना है, ठीक है? Recently, I cleared my group 2 and I cleared my group 1 in May 21. I'm also doing my graduation. In my second year of graduation, I scored this percentage. ठीक है? 11, 12 बोलना है तो बोलो, नहीं तो अवॉइड ही करो. 11th का तो बिल्कुल मत बोलना, 12th का बोल सकते हो. Otherwise, that also you can skip. Strength could have been a different question. I wanted to ask that, but since you already mentioned it, so that's absolutely fine. Hobbies जो आपने mention किया, cricket, विराट कोहली, I think वहां पर उतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं थी. So the introduction is जैसे अगर कोई क्वालिफाइड है तो हम उन्हें सबसे पहले बताते हैं कि आप अपने इंट्रोडक्शन को अपना क्वालिफिकेशन का बताइए, आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड देन टॉक अबाउट योर पर्सनल में आ जाता है आपकी फैमिली, और आपका आ जाता है आपकी पर्सनल जो हॉबीज होती है, इंटरेस्ट होता है. ठीक है, दैट्स इट. आर्टिकलशिप के लेवल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी स्टार्ट ऑफ विद द एग्जामिनेशन लेवल. वी टॉक अबाउट व्हाट एट विच लेवल आर वी राइट नाउ, what we are looking for, like you're looking for articleship opportunities and I want to learn, want to understand, you know, the essence of ऐसे करके, and then you talk a little bit about your family, right, and then strengths and hobbies. So family वाला बस include कर सकते हो, even if it's just your mother, that's absolutely fine. ठीक है? Why CA? So that was a very emotional answer. So उसमें I think that's one part. बिकॉज हर वक्त क्या होता है कि मतलब मैं बहुत लॉजिकल आंसर दूंगी आपको यहाँ पे. डेफिनेटली आपने वो एंगल वहां पे डाला, इट मूव्ड मी एज एन इंटरव्यूअर, राइट? सो डू इंक्लूड दैट, बट ऑल्सो इंक्लूड कि आपका नंबर्स की तरफ इंटरेस्ट कैसे बन गया. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अगर कुछ ऐसी चीज सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि शायद किसी और का वो सपना था, तो शायद हम उतना कनेक्टेड उससे ना फील कर पाए. ठीक है, सो बस आप उसमें ये इंक्लूड करिए कि कैसे आपका अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सब की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट बना. ठीक है, मे बी इट कुड हैव बीन योर मदर, मे बी आप ऐसे बोल सकते हो कि आई यूज्ड टू लुक एट माय फादर व्हेन यू नो बैक इन द चाइल्डहुड, एंड it used to always fascinate me what he used to do with those numbers, with those financial statements, and that's how I think my interest has developed over the years. And इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आपके किसी टीचर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा. So something, add just one more reference there. Why start audit? Okay, जब हम स्टार्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, देन डू नॉट स्टार्ट योर आंसर कि मुझे डीटी भी पसंद है बट यू नो स्टार्ट ऑडिट मुझे ज्यादा पसंद है. आप डीटी का लास्ट में बोलो कि आई ऑल्सो लाइक डायरेक्ट टैक्स. जैसे आपने बोला well, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मुझे फील्ड के बारे में कुछ आपने बताया नहीं कि फील्ड के बारे में ऐसा क्या है जो आपको पसंद है. आपने बोला कि मुझे मैंने ऑडिट में इंटर में ऑडिट पढ़ा एंड आई वाज इंक्लाइंड, एंड स्टार्ट ऑडिट कैसे जो है हाउ इट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड. ऑनेस्टली लाइक हमें भी पता है कि ऐसे नहीं होता है. ठीक है, सो जस्ट थोड़ा रियलिस्टिक हमें उसे बनाना है. थोड़ा सा मुझे वो किताबी लगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट पे आप वो बताओ कि फील्ड में जाने से क्या क्या फायदा है. नेटवर्किंग opportunities, the way, and you can use reference that I have seen a couple of my seniors, they keep sharing their amazing stories, how they get to travel and meet the KMPs, the key management personnel, right? Persons, and how they have grown so much in 3 years of articleship. It fascinates me, and I definitely would love to be a part of such an organization where I can get this exposure. At the same time, I'm able to contribute up to my according to my capabilities, and I'd also love to add value to my clients that I'm serving. तो इस तरीके से बस आप बोल सकते हो कि start audit, I believe it's a very extensive field where the learning opportunities are immense, and one can not only just learn about different industries, can get exposure in different industries, because एक article को भी at least 2-3 industry वो आराम से explore कर लेता है, Big 4 में भी अगर मैं बात करूँ तो. ठीक है, and the scale of operations आप वो बोल सकते हो, that could be fascinating. So I'm just giving you like keywords that you can use. Try to frame sentences around it. Why Deloitte? Passion for Deloitte. मुझे Deloitte की तरफ passion है. मैंने vlog देखा है.
थोड़ा फॉर्मल बनाओ, थोड़ा इनफॉर्मल हो गया ये. आप बोलो कि I've talked to a lot of people, I've talked to seniors working in Deloitte, and they speak so highly about the culture, about their seniors, and it feels like it would be definitely a lovely place to learn and to definitely collaborate with people, with intellectual people. That would not only be a great learning experience for me, but uh, बट हाँ, ऐसे ही कुछ और ऐड कर सकते हो. लाइक बेसिकली ये दिखाना है, थोड़ा सा फॉर्मल इसको ऐड करना है, एंड उसमें लास्ट में बोल सकते हो. एंड या आई हैव डेफिनेटली सीन अ फ्यू वीडियोस ऑफ अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ Deloitte on a lighter note. आप ऐड कर सकते हो on a lighter note. I've also watched a few blogs of Deloitte articles, and it looks like that it's a very amazing place to be, and amazing people to collaborate with also. ठीक है. फिर इंडियस वाला छोड़ दिया था. आई थिंक टेक्निकल आपका मोर और लेस ठीक ही था. कारो 2016 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं पढ़ा था? मैम पढ़ा तो था, मैं भूल गया वो. चलो कोई नहीं, उसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली वो टेक्निकल वाला मेरा पूरा रिवाइज नहीं था. कोई बात नहीं, अब उसको फटाफट से रिवाइज कर लो. Okay. इंडियस 109 115 एंड आई बिलीव 115 और 109 का भी पढ़ा था मैं. हाँ, 109 115 116, ये तीन इंडेस डेफिनेटली पढ़ के जाने हैं हर्ष. ठीक है. Okay. और वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. सुमेश, आई थिंक सबको आ रही है ना वॉइस? सुमेश अपना एक बार प्लीज ईयर पीस चेक कर लो. हाउ टू आंसर व्हाई इंटरनेशनल टैक्सेशन एट आर्टिकलशिप लेवल. इंटरनेशनल टैक्सेशन देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन एज इंडिविजुअली एक्सप्लोर करने को ना मिले, हो भी सकता है मिले इफ यू आर लाइक ट्राइंग आउट एट अ बुटीक फर्म, या फिर आप क्योंकि अगर आप बिग फोर की भी बात करोगे तो वहां पर आपका कॉर्पोरेट इंटरनेशनल टैक्स है. कॉर्पोरेट टैक्स भी है विच मीन्स डोमेस्टिक भी है, और उसमें इंटरनेशनल भी आता है. एंड समटाइम्स यू हैव टू कोलैबोरेट विद टीपी की टीम ऑल्सो, ट्रांसफर प्राइसिंग वाली टीम ऑल्सो. ठीक है. सो इट्स अ लाइक रादर यू शुड से कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. और उसमें क्या जस्टिफाई करना है? वेल, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज या फिर जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज जिन लोग को जाना चाहिए इंटरनेशनल टैक्स या टैक्सेशन में, दे मस्ट बी लाइक रियली गुड विद देयर लैंग्वेज. लाइक लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल बी राइटिंग like summaries and cases. You'll be preparing reports to represent in front of the officer, in front of the client also, because client doesn't understand the technical stuff. Now you have to understand those case laws. You have to deduce, and then you have to prepare reports and summaries that how a particular case law is kind of matching with this particular situation. Now you have to explain, give references to the client also. Now this all requires a lot of आई वुड से, मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई आपको शशि थरूर लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, बट अ डिसेंट होल्ड ओवर द लैंग्वेज इज मस्ट व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अ टैक्सेशन प्रोफाइल पर से. ठीक है. एंड देन you can obviously say that taxation is something when I was studying, या फिर हमेशा जब भी आपको खुद से आंसर समझना है ना, put it on someone else, that I have met so and so person and I've seen how much they have grown, how they have helped their clients in not only managing all the compliances but also saving the taxes, saving the penalties, etc. And when you are in such a position that you're able to save money for your client, I think it's a very powerful feeling. It's a very satisfying feeling, and I'd also like to be a part of this domain where I can not only learn but add value to my client as well. तो इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट साइड पे आप बना सकते हो. संतोष, इंडेस 109 115 116, ये तीन आपको पढ़ के जाने हैं. ठीक है. इंडियस आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज में नहीं रहेंगे मैम, राइट? पुचार नहीं रहते हैं, बट एज यू नो इंटरव्यूज आर अनप्रिडिक्टेबल. कभी एक आधा बार पूछ भी लिया, सो आई थिंक ऊपर से पढ़ के जाने में कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक इट वुडंट cost you anything to over prepare, right? So ma'am, how to answer why ye ho gaya? No, apart from being a good professional candidate, he is also a strong person. What's the resources? What's the password for resources? Resources पे कोई password ही नहीं लगाया. Arshish, I hope I'm pronouncing your name correctly. Avantika, are you here?
Harsh, do you want to ask something? You've raised your hand. Oh, okay. So Avantika, please unmute yourself. We'll start your interview. Are you there? Hello. Hello. Yes, ma'am. अच्छा, अभी अवंतिका आर्टिकलशिप लेवल पे है या क्या है आपका? आर्टिकलशिप का था ना? Yes, ma'am. Articleship. अच्छा, मैं लेट मी आस्क, अगर कोई सीए वाला है तो बिकॉज वी हैव टू कीप इट बैलेंस, राइट? सो लेट मी आस्क, कोई सीए वाला है तो, नहीं तो फिर हम आपका कंटिन्यू करेंगे. एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द हाउस जिनको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में ट्राई करना है? एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द हाउस? सोनू वाज देयर बट आई थिंक ही लेफ्ट. आकाश ने वीडियो ऑफ कर ली. मेरा इंटरव्यू खत्म. ओके, बाय बाय, जय नमस्ते. हम जाएंगे अब लोरी खेलने. मैंने कॉन्शियस कर दिया. कोई नहीं, ऑफ कर लो, कोई बात नहीं. Future CAs in the house. That's the spirit, Harsh. That's good. चलिए फिर आई थिंक अवंतिका से ही स्टार्ट करते हैं. I can graduate on a 8 years of experience and can get a job in Big Four. Yogesh Bangar. I am a graduate. Yes, definitely. You can definitely get a job in Big Four, Yogesh. But मतलब exactly precise question क्या है? We'll come to you. But let's finish the interview first. Otherwise, थोड़ा late हो जाएगा. We'll take the queries in the end. अभिषेक ने ज्वाइन नहीं किया क्या यूट्यूब से? वो बोल रहा था ज्वाइन करूंगा मैं. If a person want to shift to Big Four, please. Hello ma'am, I took dummy article. चलो. Are you ready, Avantika? Hello, Avantika. Can you hear me? अरे मैं कमेंट देख रही थी अभिषेक यूट्यूब पे भी, पर थोड़ा धीरे देखती हूँ. इधर क्या है, नोटिफिकेशन एकदम पॉप कर जाता है आंखों के आगे. अवंतिका, आई अनम्यूटेड यू. Yes, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो आप? I'm good, ma'am. Shall I share my resume? यू कैन, बट इट्स फाइन. लाइक करना है तो कर दो, बट डोंट शेयर इट विद एवरीबडी, अदरवाइज आपकी डिटेल्स थोड़ा वो हो जाएंगी. वीडियो नहीं स्टार्ट करोगे अवंतिका? थोड़ा बेटर लगता है वीडियो के साथ. Yes, ma'am. Just give me 1 minute. Let me share my resume first. अच्छा, रिजल्ट का क्या रहा ये तो बता दो. I've cleared it, ma'am. बोथ ग्रुप्स हो गए ना अब आपके? Ma'am, now I'm a CA finalist. ये कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो भाई अवंतिका को सारे. Thank you, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशंस अवंतिका. कहाँ पे रहते हो आप? I live in Salem, ओह नाइस. but I'm planning for articleship in Bangalore. Suitable choice. Are you sharing your resume or shall we start? Yes, ma'am. Just 1 minute. मैं पार्टनर लेवल का रेफरेंस लगाया है. Ma'am, actually, I also gave an interview for taxation profile, ma'am, recently. Okay. I think it did not go very well. I just got a little confused with the questions because it was pretty tricky. So I'm not sure what is going to happen. कोई बात नहीं, विल टॉक अबाउट इट. अभी का क्वेश्चन है, अभिषेक का क्वेश्चन है कि पार्टनर लेवल का रेफरेंस लगा है लेकिन टेक्निकल राउंड है, और मैंने सुना है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभिषेक. अगर बिना प्रिपरेशन के चले जाओगे, पार्टनर लेवल की रेफरेंस भी वेस्ट हो जाएगी. ट्रस्ट मी, पार्टनर लेवल की रेफरेंस बस इतना हो सकती है कि आपको रिस्पॉन्स बाकियों से जल्दी मिल जाएगा. ठीक है, आप किसी भी लेवल की रेफरेंस लगाओ, अगर आप इंटरव्यू में अपने नॉलेज को प्रूव नहीं कर पा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, और ये मैं सिर्फ बिग फोर की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी ऐसे ही रहेगा. यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई अनटिल अनलेस वो आपके ससुर जी की फॉर्म हो. ठीक है, तो Yes, ma'am, I've shared it. हाँ, आई एम येट टू रिप्लाई अ लॉट ऑफ टेलीग्राम पे मैसेजेस, तो आई विल बी रिप्लाइंग होपफुली. इतना बिजी वीक था ना रिजल्ट के आने के बाद, so hopefully I'll get some time tomorrow, so I'll be replying to all of you. Okay Anish, I'll reply you there. How to answer the question, what do you think your weaknesses are?
चलो एक बार अवंतिका का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मैम मेरा क्वेश्चन मिस हो गया बीच में, बता तो दिया अभिषेक. मैम मॉक इंटरव्यू नेक्स्ट सेशन कब होगा? आई थिंक मोस्टली शायद नेक्स्ट वीक में वेंसडे को होना चाहिए, मंडे को नहीं होगा, वेंसडे को होना चाहिए. ठीक है. Okay. सो अवंतिका, आई हैव रिसीव्ड योर रेज्यूमे. सिर्फ एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूंगी आपको. आपने sure. 2 कॉलम्स में डिवाइड करा हुआ है. ट्राई टू मेक इट इन अ लीनियर फॉर्मेट, लाइक अ रनिंग फॉर्मेट. डोंट डिवाइड इट इन 2 कॉलम्स. ठीक है. चांसेस वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर कंड्यूसिव टू द ATS, that is the application tracking system. So try to make it in a single linear format. ठीक है. Ma'am, what about being it domain specific? डोमेन स्पेसिफिक तो बनाना ही है, पर मैं बोल रही हूँ आपने 2 कॉलम में डिवाइड कर रखा है. मैं बोल रही हूँ सिंगल उसमें बनाओ, 2 कॉलम में मत डिवाइड करो. जो Ma'am, हाँ, बाकी डोमेन स्पेसिफिक एटलीस्ट 2 रेज्यूमे तो बनाकर ही रखने हैं. अच्छा. ठीक है. Okay. 2 डोमेन स्पेसिफिक रेज्यूमे तो बनाकर ही रखने हैं, Okay, ताकि ma'am. किसी में भी कोई भी वैकेंसी आए, जो भी 2 आपके फेवरेट डोमेन्स हैं, चाहे वो ऑडिट जीएसटी या फिर ऑडिट इंटरनल ऑडिट, बना के रखो. ऑडिट में वैकेंसी ऑडिट वाला फॉरवर्ड कर दो, इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी इंटरनल ऑडिट वाला फॉरवर्ड कर दो. ठीक है. Okay. मैम बोलो बोलो. कोई resume में. अब अभी पहले इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट. ठीक है. Okay, ma'am. राइट. सो अवंतिका, वीडियो स्टार्ट कर लो. थोड़ा देख के लगेगा कि मैं एक बॉट से बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसान से ही बात कर रही हूँ. Okay. एंड यू फॉलो हिंदी, राइट? ओके, Yes. राइट. चलो. सो अवंतिका, लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. Good evening. This is Avantika Jain. I've completed my CA intermediate exams in November 23, and I completed my foundation in the first attempt. I completed my high school from CUNY Metric, which is in the commerce field, and I did my 10th in CUNY Vidyaniketan. I was also given the opportunity to be the president of the Interact Club, which is associated with the Rotary Club of Salem Metropolis. During this tenure, I had the opportunity to take up various projects, and some of my interests and hobbies include calligraphy and bullet journaling. Okay, right. So tell me, why did you choose CA after your class 12? Well, I'm more inclined to the field of finance, taxation, accounting, and auditing. And CA is one career path which is very overall, which would help me to grow as a person and learn so much more, have a wide range of exposure and learning. So that's why I chose CA. Okay. But why statutory audit? Well, I believe that as in the field of statutory audit, we get to travel, we get to learn from other people, and it is a very exciting opportunities, because every day we have something new to learn, and this would really quench my thirst for learning and persevere to become better at my field. Right. So tell me, Avantika, have you worked on Excel, MS Excel? During my mandatory training, I did learn a basic Excel. I did working knowledge of Excel. Okay. So tell me, what's the purpose of audit? Well, audit is an independent financial assessment of the statements, whether the firm is profit oriented or not, irrespective of its size and nature, so that an auditor can express its view whether the financial statements are appropriately represented. Okay. Tell me the assertions for transactions and balances.
Sure. Well, the assertions could be of two types, either class of transactions or account balances. When it comes to class of transactions, it includes items from the income and expenditure or the profit statement of profit and loss. So those items are some of the assertions for transactions could be occurrence, measurement, valuation, and some of the assertions for account balances could be that is which is from the balance sheet, the assets and liabilities. The assertions include completeness, existence, and preparation and disclosure, and rights and obligations. Okay. What is control testing? Well, control testing is it is a testing of the process flow of the audit, like through the diagrams, and we try to get the understanding of the entity's process of the workflow. Okay. Tell me the difference between internal audit and statutory audit. Well, statutory audit is in compliance with the law, and we are supposed to take care, like review that whether the company has complied with whatever the requirements of the company law are. Whereas internal audit is done for the to understand the controls, to understand the deficiencies of the environment, of the internal environment of the organization. Through internal audit, the organization can identify its weaknesses and can work on it. Whereas statutory audit is a compliance, so it is mandatory, and every company has to comply with it. Every company which is eligible has to comply. Okay. Tell me the difference between performance materiality and overall materiality. I think I'm not sure about it. What is materiality? Materiality is yes, okay. Materiality is something that would have a financial impact. That is, it is very huge that the user's decisions could be impacted. So something which is which has the ability to modify the decisions by the users. Okay. Do you know about India's 109? No, ma'am. Sorry. No problem. I may not know it right now, but I can assure you that I might get back to it. I might learn and expand my knowledge. Okay. Right. Have you said that you have working knowledge of MS Excel? Have you worked with VLOOKUPs? Yes, ma'am. Okay. Tell me about the latest XLOOKUP. Well, as far as I can recollect, XLOOKUP is that when the columns are horizontal, and when we want to find the corresponding row, the value of the corresponding row. Are you sure it's for XLOOKUP? Okay, no, that is for H lookup. That is horizontal lookup. Yeah, that is, yeah. So yeah, that is H lookup. Yeah. Then what's VLOOKUP? VLOOKUP is like vertical. When you have the columns and you want to find out the corresponding value to the column, like for example, there is a column on the 5th, and it has employee name, and we want to find out the salary of the employee, which is on this corresponding column. So when we type in the function of VLOOKUP, we can type in the name, and we'll get the corresponding salary of the employee which we are looking for. Okay. Tell me the difference between count and count A.
count is sequential, like it does not include the first value, like, and the count A includes, we can give a command where count A starts the counting from a specific row or column. Okay. Does count A include blank cells or not? No, count A does not include blank cells. Okay. Okay. What are your strengths, Avantika? Like skills. Strengths. Yeah. So my strengths are leadership skills, communication skills, and I tend to adjust and adapt more easily and quickly. These are the skills I believe everybody's having. Why should we hire you? Well, in the field of statutory audit, the unique skill sets that I bring to the table is a right combination, and it would make me contribute to your team more effectively. And this would make me more perfect for this role because the combination of the skill sets that I have. Do you think you have any weaknesses? Yes, I do have a weakness. And that would be that I'm very detail oriented. Because of this, I tend to spend much time on projects. However, this could also be my strength because I tend to go to the details and find out the mistakes even in the smallest things. Which project are you mentioning here, by the way? Like, shall I quote an example? Yeah. Well, it would be an example of my intermediate exams and studies. Because of my detail-oriented nature, I tend to spend time even on the questions that are not proper in the study material, where people tend to skip it, but I still do them. So that could be one weakness for me because I'm spending more time on that. But it's a good quality, don't you think? An auditor is meant for his detail orientedness, and eye to the detail is what we say for an auditor. Yeah, it is a matter of perception. Well, some may think it is a weakness, some may think it is also a strength. Right. Do you have any questions for me? Yes, I would like to ask more about your company and the projects. Like, what is the job description that you are expecting from me? So I think you must have read about the company on internet, right? So let me tell you a little bit about the team and the work that you'll be doing. So you will be joining, if you're selected, you'll be joining the statutory audit department, and we have a team of 6 people, and you'll be joining as an article intern with 2 other people. So you will be handling different projects wherein obviously we have to carry out the entire audit assignment. And definitely there are busy seasons and there are free seasons. So that's about it. We are a very collaborative team. We believe in adding value to the client. So we make sure that whatever work we are doing, we are delivering absolute value to the client without any scope of mistake. So we, as you said, that you are very detail oriented. So that is going to be really helpful because an auditor's role is to definitely find out the minutest of the mistakes where anybody else would not maybe probably notice. So that's where that's what we specialize in. That's about it. ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच. कैसा किया गाइस? अवंतिका ने जरा फटाफट से चैट में बताइए. लेट्स बूस्ट her मोरल. आशा अभी आंसर करते हैं आपका क्वेश्चन. केविन लेवन फॉर PER, इज इट सूटेबल फॉर ACCA इंटरव्यू? केविन,
PER आपका कौन सा वो है? PER 36 months of soup. Yes, you can definitely, like, आपको जिस प्रोफाइल में जाना है केविन, उसके लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. बता दीजिए. सम आंसर्स, हैविंग ग्रेट कॉन्फिडेंस, वेरी गुड. ठीक है. So हाँ, चलो एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देन विल टेक अप द चार्ट. Introduction was on point. I don't think I have any changes for that. Good. You have great confidence, Avantika. You have good communication skills. You have a really good command on the language, and the way you articulate your thoughts is something that I really appreciate. Good. Why CA? Wide range of exposure, finance, learning, etc. I believe fair answer, but you can improve it. Improve करके थोड़ा सा, I believe we all love to hear stories, right? If I could hear a story how Avantika was introduced to CA, right? Maybe it would stand a little different in my eyes. Because मैं शायद आपके वाला same answer 10 लोगों से और सुनने वाली हूँ. So maybe this is one way to differentiate yourself from other candidates who are also applying for the same position. ठीक है? There is no problem with the answer though, right? Start audit. फेयरली गुड आंसर. आई थिंक टेक्निकल जो है, आपको टेक्निकल थोड़ा और ब्रशअप करना पड़ेगा आपको टेक्निकल में. चाहे वो MSL है, चाहे वो आपका परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और ओवरऑल मटीरियलिटी, बेसिक क्वेश्चंस हैं. आई बिलीव ये सब तो मतलब हमने उसमें ऑडिट में पढ़ाई है ना, तो उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए. अदर्शंस वाला क्वेश्चन आंसर ऑन पॉइंट था. कंट्रोल टेस्टिंग में यू कुडंट ऐड मच वेट टू द आंसर. Process, flow of audit, it was just that. Like, अगर मैं क्रक्स बताऊं उसका आंसर का, तो यही था कि हाँ, that's what you were saying. So maybe I add a little more weight to the answers. ठीक है. And Excel, हाँ, Excel थोड़ा कर लो, because हो सकता है, like usually articleship level पे इतना expect नहीं किया जाता है, but just in case अटक गया, because we are preparing ourselves for the worst, so we don't know, right? Strength and weakness, this is the question where I want you to include changes. Strength, जैसे आपने बोला, leadership, communication skills, adaptable, ये सब सभी बोलने वाले हैं ये, ठीक है. बट जब मैंने आपको थोड़ा सा पोक किया, तब आपने बोला the unique set of skills that I bring to the table is something that I like. ठीक है, उसको अपने स्ट्रेंथ वाले में ही इंक्लूड करो थोड़ा सा, कि किस तरीके से. और हर एक को एक्सपीरियंस को, जैसे मैंने आपको बैक करने के लिए बोल दिया, जब मैंने आपसे वीकनेस से पूछा कि मैं डिटेल ओरिएंटेड हो जाती हूँ प्रोजेक्ट में, अब मुझे भी पता है कि आपने लाइन कहाँ से उठाई है. ठीक है. इंटरव्यू चीट शीट मैंने ही बनाई है. ठीक है. सो लेकिन आपने वहां पे प्रोजेक्ट बोल दिया, लेकिन आपके पास तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने प्रोजेक्ट क्यों बोल दिया कि आई टेक, बिकॉज आई एम सो मच डिटेल ओरिएंटेड, सो द प्रोजेक्ट्स टेक मच लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट, राइट? सो आपने वहां पे, तभी मैंने बोला पोक किया आपको कि प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द लास्ट प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन? यू क्लियरली हैवंट. तो आप बस बोलो कि आई एम इन जनरल अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, व्हिच मेक्स माय decision making process a little longer. And now I believe if this were to happen in a professional setting, I believe this would unnecessarily delay the projects and might also create a bit of tussle with my other colleagues. But I'm trying to improve it. What I can do is I can ask the deadline before in advance, so that I can make all the do all the analysis that I need to do before coming to the decision, and then we can sit and discuss and decide. So इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मैंने अभी तक अप्लाई, मुझे नहीं पता प्रोफेशनल सेटिंग में, तो आप if I believe if I were in this professional setting, I believe this could hamper the project. But definitely I believe this can be worked upon, and I'm already working upon by collaborating with more and more people. I have started for the interview preparation only, I've started networking with other people so that I can get along with people and learn to be a little more welcoming with ideas, etc. इस तरीके से, ठीक है? Overall really good. बीच में थोड़ा फंबल हो रहा था, वो भी वहां पर जहां पर आपको आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट? विच इज वेरी ऑब्वियस कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे आता नहीं है, सो वो होना ही होता है. उसमें नोबडी इज गोइंग टू जज यू कि आप ऐसे कर रहे हो, आप सोच रहे हो. इफ यू फील कि मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एकदम से नहीं आ रहा है, टेक अ मोमेंट, ठीक है? कोई नहीं आपको मना करेगा कि नहीं आपने 30 सेकंड्स कैसे ले लिए सोचने के लिए. सो टेक 30 सेकंड्स का पॉज,
या फिर बेस्ट टेक्निक, water, you are usually offered water, drink the sip of water, it will also help you in flow of your thoughts and it also gives a break कि हाँ ठीक है मैं पानी पी रहा हूँ, मैं आंसर दूंगा उसके बाद या फिर मैं दूंगी उसके बाद, ठीक है. So take that water break or take 30 seconds, it's okay, nobody is gonna judge you for that, ठीक है. So 10-15 सेकंड या 20 सेकंड लगाकर सोच लिया करो, उतना बहुत बहुत टाइम स्पेस होता है हमारे ब्रेन के पास, वो कर लेता है इतने में आंसर फ्रेम, ठीक है. Let's read a few questions that we are getting. Anything else, Avantika? How was your experience? It was okay. Yes, ma'am, that's true. Because of the मैंने division बराबर से नहीं किया, इसीलिए I was not very confident while answering the technical part. No worries. अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है, रिजल्ट आए हुए, कोई बात नहीं. But ma'am, I have a question. If there is a question which I do not know, how do I answer it? Like, how do I tell them that I don't know about it? You answered, I think, one question कि I will get back to you and definitely, but आप ही ने आंसर किया था ना ये? Yeah, I will do a lot of learning so that I can expand तो my. इसमें क्या कर सकते हैं, या तो देखो दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं. एक तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है पर अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है, ठीक है. ठीक है, वीडियो अटका है, मेरा अटका है कि किसका अटका है? गाइस कैन यू लेट मी नो इफ माय वीडियो इज. No. Is my internet working fine, guys? Can you let me know? Okay, cool. So I'll just continue. अवंतिका आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, I'll just continue with your answer. तो आप उसमें like जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप जिसके बारे में आपने लाइफ में कभी सुना नहीं है, then you can just simply say I'm sorry, I do not know the answer, but I can definitely do the research and get back with an answer to you. I'll definitely reply to you, ठीक है. And in that case आपको क्या करना है, if you really want to leave an impression on that person, आपको जिस भी इंसान के साथ आपका इंटरव्यू होगा उनका सीसी में email ID मिल जाएगा. Try to find that person on LinkedIn as well. And when coming back, whatever question they had asked and you did not know the answer, research about it, write an answer, mail it to them, send the message on LinkedIn. Try to reach out to them after the interview so that they remember you. Okay? It looks promising also that you said something and you did it. Okay? Other than that, if there are questions that you believe that you've read or you've studied but you're not able to recall at the moment, you can just simply say, well, I have studied this but I'm not able to recall at this moment. तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Simply saying no, nobody knows 100% of the answers, ठीक है. तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. Okay, let's take up questions. And अभी तक का सेशन कैसा था guys? Did you guys learn anything new? Let me know in the chat. कैसा रहा आपको? Did you guys enjoy the session? Did you find the insights useful for you? मैम दिल्ली में IT OC की सीट नहीं मिल रही है, प्लीज रिप्लाई. अब इसमें तुशांत मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आप फरीदाबाद ट्राई कर लीजिए, आप गाजियाबाद, नोएडा ट्राई कर लीजिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है. और ये सब चीजें थोड़ा पहले बुक करके रखनी पड़ती हैं. अभी एकदम पीक सीजन चल रहा है अभी, क्योंकि सब लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया होगा. तो वैसे भी 30 अप्रैल तक की लास्ट डेट है रजिस्टर कराने की आर्टिकलशिप की. तो जैसे ही कोई बैच मिले आप करवा लेना रजिस्टर, ठीक है. अगर if a CA spends 1 year in banking as RM relationship manager, please guide about the challenges. कोई भी challenges नहीं है. I believe अभी मैंने I think कुछ टाइम पहले एक कैंडिडेट के साथ उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. he was in the banking industry. तो मैंने पूछा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में RM वाला रोल तो हर कोई आसानी से ज्वाइन नहीं करता है, आपने क्यों ज्वाइन किया? कहते कि मुझे रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना था. दैट्स वेयर आई बिलीव आई वाज नॉट गुड एट, एंड मुझे लेटर ऑन अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. तो वो जो रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है क्लाइंट के साथ, किस तरीके से परसिवियरेंस के साथ हमें क्लाइंट के साथ फॉलो अप रखना पड़ता है, दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू लर्न. और इसीलिए जो है मैंने RM का रोल लिया. सो यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू आर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोफाइल.
और 1 ईयर स्पेंड कर भी लिया है तो कोई चैलेंज नहीं है, आपके पास आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। भाई आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, श्योर ये हो सकता है कि आपको फ्रेशर वाला सैलरी मिले, 1 ईयर का एक्सपीरियंस नॉर्मल इंडस्ट्री में शायद उतना ना काउंट हो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपको ट्रेन करने में कितना टाइम लगेगा। सो दैट बीइंग सेड, कोई चैलेंज नहीं आएगा आशा, बिल्कुल आप बेझिझक, आपको स्विच करना है, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में ही डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करना है, ऑल दी ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। कंसल्टिंग फर्म, इंडस्ट्री, बिग 4, मिड साइज, you can join anything. ठीक है? Are these mock interviews, like I mentioned, Jay, these interviews I believe are relevant for ACCA students as well, क्योंकि more or less आपके इंटरव्यू का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सवाल पूछे जाएंगे, जो रोल आप ज्वाइन करेंगे, वो more or less सेम ही रहने वाला है। ठीक है? और जो HR राउंड है वो तो pretty much I think it is same across every domain. Tell me something about yourself, what are your strengths, why this field, why this company, etc. etc. डमी आर्टिकलशिप लिया था, इज देयर एनीथिंग? डमी आर्टिकलशिप वाले बच्चे, क्या बताऊं अब मैं। देखो डेफिनेटली जो मिस्टेक हो गया है अब उसको कवर अप करना है। यू विल प्रोबेबली हैव टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम अ मिड साइज firm or a small size firm so that you can learn the basics, and then later on when you feel that you've acquired the needed experience, you can look for other opportunities where you can get more exposure. अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग वाला ही सीखना है। इफ एट ऑल जो कोई लोग हैं आपके रेफरेंस में जो आपको सिखा सकते हैं वो काम, आप डेफिनेटली उनसे रीच आउट करिए, नहीं तो आप खुद से जॉब्स अप्लाई करना शुरू करिए। ठीक है? कैन आई गेट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर रिसोर्सेज? हाय योगेश। योगेश आप फ्री करियर मास्टर क्लास में जाइए। ठीक है, मैं भी दिखा देती हूँ आपको, रुको स्क्रीन शेयर करके। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ फॉर दोज हु आर आस्किंग कि ये कहाँ से मिलेंगे। ये देखो, ये है फ्री करियर, ये आपका फ्री करियर मास्टर क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपकमिंग लाइव्स हैं, ये आपके फ्री डेमो सेशंस हैं। हर एक डोमेन का डेमो सेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का सेक्शन है, और इस रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। दीज आर डाउनलोडेबल, लाइक डॉक में है, लिटरली यू कैन जस्ट अपलोड एंड गूगल ड्राइव एंड स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस, या फिर आपके पास वर्ड है तो वर्ड में आप डायरेक्टली चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, then these are technical questions, then this is the interview cheat sheet that I was talking about. ठीक है, तो इसमें सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो HR राउंड के हैं, जो टेलीफोनिक राउंड है, और उसमें किस तरीके से आपको आंसर करना है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस, हमारे पास लिंक्डइन का चीट शीट भी है, लिंक्डइन का चेकलिस्ट भी अपलोडेड है यहाँ पर, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। On that note, let's, but understanding the business is included in RAD, which is after the planning stage. What to do when we are confused about an answer? Avantika, take a moment, like pause करो, सोचो। जैसे मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था एक्स लुकअप वाला, वो मैंने जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछा था। ठीक है, सो एक्स लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, दीज आर द 3 थिंग्स। पहले एच लुकअप और वी लुकअप चलता था, एक्स लुकअप अभी लेटेस्ट आया है, उतना भी लेटेस्ट नहीं है कि भाई पिछले महीने आया हो गया उसे, आई थिंक 1-1.5 साल तो उसे भी हो गया। सो एक्स लुकअप इज लाइक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एच एंड वी लुकअप। सो उस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए। इफ यू कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे आपसे इस तरीके से, बट टेक अ मोमेंट, पॉज एंड देन रिप्लाई। ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, वो बोल देंगे गलत है, ओके आई एम सो सॉरी, आई विल रिसर्च मोर अबाउट इट, आई विल रीड मोर अबाउट इट, and then I'll definitely make sure it's not wrong the next time. Okay, how to answer the question? Naman का बहुत अच्छा question है। How to answer the question? Tell me something about yourself which is not in your CV. ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है आजकल। Tell me something that is not on your resume. अब आप बोलोगे, मान लो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप सोचोगे यार इतनी मेहनत लगाकर मैंने पूरा रेज्यूमे में इतनी मेहनत से सारी सर्टिफिकेट डाल दी, स्कूल पे जो मैंने कॉम्पिटिशन्स लिया था, मैंने कोई कोर्स करा था वो डाल दिया, मैंने अपने मार्क्स डाल दिए, मैंने इंटर्नशिप करी थी, मैंने वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस करा था, मैंने ब्लड डोनेट किया था, मैंने सब डाल दिया, अब मैं क्या डालूं, मैं क्या बताऊं।
तो यहाँ पर आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करना है, ठीक है। मान लो आपने लिखा हुआ है कि भाई मेरे पास लीडरशिप स्किल्स हैं, या फिर आप लिख लीजिए कि मैंने स्कूल लेवल पर आपने, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स कैप्टन थे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के। वेल आई लव स्पोर्ट्स, जैसे आपने मान लो अपने इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, आप बोल सकते हो वेल आई मेंशन दैट आई लाइक स्पोर्ट्स, बट I'd like to quote one incident from my school days. I remember that it was a very tough match and my team was absolutely losing. I was on the we were on the losing side, and I was also not a very I was not also the main player. I was, because I was still learning. I had just joined the team, but I happened to bat at the third level, and I made the I made so many runs. For example, क्या आप बोल सकते हो, मैंने 50 रन बना लिए, and everybody was shooting. I still remember that day, what true sportsmanship is, when you are not thinking कि भाई क्या होगा, you're just in the game and you're giving your 100% and everybody is there cheering for you. So that's one incident that I clearly remember from my school days. So इस तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर आप कोई अपना खुद का कोई इंसिडेंट ट्राई टू बैक इट अप विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी आपने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में ही मेरे हैंड में स्वेलिंग हो गया था, एंड माय हैंड वाज लाइक, दिस इज अ रियल स्टोरी बाय द वे। सो पूरा जो है स्वेलिंग हो गया, एंड आई बिलीव मेरे को लगा कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में बैठ ही नहीं पाऊंगा, एंड देन आई वाज क्राइंग ऑन माय वे बैक, आई हैड सो मच पेन इन माय हैंड, but then I still went ahead and gave my second exam, third exam and fourth exam, and to my surprise I actually cleared that attempt, right? So if you just continue to persevere no matter what the situation is, what the circumstances are, you definitely will end up getting what you worked for. So is tarike se you can just make up incidents, not like make up, but try to come up with real life incidents from your life. That's how you should answer it. ठीक है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी? आई थिंक इसका तो बेसिक आंसर हो सकता है दैट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, like I believe I am okay with that. Since I'm a fresher, I believe the industry a salary according to the industry standards would be okay. I'll be okay with that. Ma'am, graduates get jobs in Big Four. I also have experience. 100% बिग फोर्स कॉलेजेस में जाकर बच्चों को हायर करती हैं खुद से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कितने कॉलेजेस में जाती है, हर कॉलेज से एवरेज 50-60 बच्चा लेकर जाती है, जो ऑब्वियसली दे डोंट गो टू ऑल कॉलेजेस, बट जिन भी कॉलेजेस में वो जाती हैं दे ट्राई टू हायर लाइक 40 to 50 पीपल फ्रॉम एवरी कॉलेज। सो ऐसा नहीं है ग्रेजुएट्स की हायरिंग नहीं होती है, ग्रेजुएट्स की, डायरेक्ट ग्रेजुएट्स की भी हायरिंग होती है। और आप योगेश, आपके पास तो वर्क एक्सपीरियंस भी है, आप डेफिनेटली उनका ग्लोबल आर्म जो है ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंडियन आर्म ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू जस्टिफाई द एक्सपीरियंस। ठीक है। आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। सुपर टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या फ्री रिसोर्सेज में? यस, टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ऑडिट इंटरव्यू गाइड बुक अपलोडेड है वहां पर भी, वहां से आप ले सकते हो और आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे लिए क्या सवाल है भाई? सौमिल का सवाल है, आप लोग what to do in order to get more interview calls and find jobs quickly within a month in Big Fours? Asha, I think 1 month का exercise नहीं है. This is a long process. You have to keep patience. ठीक है। एंड जितना ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, जितना ज्यादा नेटवर्किंग करोगे, रेफरेंसेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। कम से कम भी, मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो 10 लोगों को भेजोगे ना मैसेज, एक का रिप्लाई आएगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करो कि मुझे अगर लाइक एक्चुअली में, और रिप्लाई आने के बाद भी जरूरी नहीं आपको इंटरव्यू कॉल आए, रिप्लाई आएगा फिर इंटरव्यू कॉल होगा, फिर सिलेक्शन के चांसेस तो रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है ना। सो try to reach out to as many people as possible, try to reach out to partners, try to reach out to managers, directors and your peers also, जो आपके लेवल पे काम कर रहे होंगे, उनको reach out करो, networking करना start करो and ask them कि can you refer me for this particular role। ठीक है।
सो लीव कैसे मांगनी है? आई लिव इन मुंबई, अप्रैल में है, कोई नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना सौमिल, तो आप सिंपली उनसे बोल सकते हो, आई हैव माय ब्रदर्स वेडिंग एंड आई विल बी अनअवेलेबल फॉर 15 days, तो आप मेरा जो ज्वाइनिंग है या तो मेगा करा दीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझे मतलब लीव दे देना, एक बार ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, लीव तो बाद में मिल जाएगा, ठीक है, पहले आप ये देखो प्रायोरिटी क्या है आपके लिए। On that note, let's end today's session. I hope you guys had a great time with me. I certainly did. I hope I was able to add some value to your life today. And I hope जल्दी से जिसका जो ड्रीम कंपनी है वहां से उनको कॉल आ जाए। आप बिग फोर में जाना चाहते हैं, आपको बिग फोर से कॉल आए, आप एक बुटीक फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वहां से कॉल आ जाए, या फिर आप टॉप 10 ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम कंपनी है, आई रियली विश आपको वहां से कॉल आए। कीप परसिस्टिंग गाइज, कीप फाइटिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। जहां पर भी आपको जो कमियां लग रही हैं, प्लीज वर्क ऑन देम, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। बाकी सब चीजें भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा। And on that note, good night, happy Lohri once again. And kal Makar Sankranti hai, which is a very big festival for Indians in the north. So happy Makar Sankranti to you. Good night, guys. Bye bye. Take care.